नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ गैलेक्सी ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। डॉक्टर मक्कर सर, जो भूतपूर्व चेयरमैन प्रेसिडेंट आरएसएसडीआई के रहे हैं। डॉक्टर परिमल स्वामी भोपाल से हैं। डॉक्टर नर्मदा पटेल भोपाल से हैं। सब डायबिटोलॉजिस्ट हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस में सुबह से बात चल रही है, तो जहाँ तक निचोड़ निकल के आता है तो आ जाता है लाइफ स्टाइल पे बात अटक जाती है। नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत सी दवाइयाँ भी आ रही हैं। ओबेसिटी अब उभर के आ रहा है कि ओबेसिटी लिवर, ओबेसिटी से हाइपोगोनेटिज्म, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, डॉक्टर मक्कर सर हमारे साथ हैं जिन्होंने ओबेसिटी पे बहुत काम किया है और आगे काम कर रहे हैं। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर, जो अभी जो नई नई GLP-1 जो एनालॉग्स जो मेडिसिन आई है, और बड़ा व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे बड़ा इनका वो चल रहा है, बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग ले रहे हैं कि उससे वेट कम हो रहा है। सर, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, और आपने मुझे यहाँ RSSDI मध्य प्रदेश चैप्टर में इनवाइट किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि अभी जो नई दवाइयाँ आई हैं, जो जिस कैटेगरी को हम GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं या डुअल GLP GIP एगोनिस्ट हैं, इन दवाइयों ने जो ओबेसिटी मैनेजमेंट है उसको काफ़ी रिवोल्यूशनाइज कर दिया। और इनसे पहले हमारे पास जो ओबेसिटी के लिए ट्रीटमेंट था, वो हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस पे बात करते थे कि आपको डाइट कम करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। कुछ दवाइयाँ थी जिनका इफेक्ट बहुत माइल्ड था, सो हम 5-10% से ज़्यादा वेट रिडक्शन नहीं कर पाते थे। और हमारी जो सर्जिकल ऑप्शंस थी उसमें वेट रिडक्शन 25, 30, 35% तक हम पहुँच जाते थे। और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट थे, उनकी स्टडीज से हमको ये भी पता चला कि अगर हम 20-25%, 30% वेट लूज कर जाते हैं तो हमारी डायबिटीज रेमिशन में चली जाती है, ब्लड प्रेशर की दवाइयों की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है, हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है, लिवर की फैट डीकंजेस्ट होती है, लिवर फाइब्रोसिस आपकी रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, ओवरऑल डेथ रेट कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में एडवांटेज होता है। सो अब चैलेंज ये था कि जो गैप है 10% से 30% का, उसको भरने के लिए हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी। और अभी ये दवाइयाँ जो आई हैं, इनसे हम 20-25% वेट लॉस तक अचीव कर सकते हैं। अब इन दवाइयों का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझने की है, पहली चीज़, ये मॉडर्न दवाइयाँ हैं, एडवांस दवाइयाँ हैं, बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, वेल स्टडीड है। बट जब कोई भी दवाई शुरुआत में यूज होनी शुरू होती है तो बहुत सारी चीजें हमें, जब बहुत ज्यादा स्केल पे यूज होती है, क्लिनिकल लेवल पे या मास लेवल पे, तो हमें कई चीजें और नई सीखने को मिलती है, जो उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो उनके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो हमें शुरुआत में थोड़ा कॉशियस रहना हमेशा जरूरी होता है। जैसे बहुत सारी दवाइयों के साथ अब वेट रिडक्शन में लोगों ने ये सोचा कि ये जादू की दवाई है, मतलब मैजिक बुलेट है, आप लेना शुरू करो, इंजेक्शन, वेट लूज करोगे। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने प्रमोट करना शुरू कर दिया। बट लोग ये भूल गए कि ये एक दवाई है जो मेडिकल सुपरविजन में एक डॉक्टर की एडवाइस पे लेनी चाहिए, सोशल मीडिया देख के नहीं लेनी चाहिए। जब आप वेट लूज करते हैं तो आपके वेट लॉस में क्या, आप वेट क्यों लूज करना चाहते हैं, पहली चीज आपको ये समझनी है। एक पहलवान आदमी है, उसको तो आप वेट लॉस के लिए नहीं बोलते, उसका वेट भी ज्यादा। बट एक आम आदमी जिसका वेट ज्यादा है, उसको वेट लॉस के लिए बोल रहे हैं। वेट आपको लूज नहीं करना, आपको फैट लॉस करना है। फैट लॉस क्यों करना है? क्योंकि उस इंसान में वो फैट की मात्रा इतनी है कि वो सिक फैट है, वो इन्फ्लेम्ड फैट है। अगर उसको हम कम नहीं करेंगे तो उसके इन्फ्लेमेशन से उसको बीमारियां होती रहेंगी। और ओबेसिटी में अभी आज की डेट में करीब 240 और ऐसी बीमारियां जो ओबेसिटी की वजह से बढ़ जाती हैं। सो अगर हम इसको कम करते हैं तो उन बहुत बीमारियों से बच जाते हैं। अब कम करने के लिए हम इनडायरेक्टली वेट देख रहे हैं हम, क्योंकि हम फैट मेजर नहीं करते। लेकिन जब वेट रिडक्शन हो रहा है तो आपको ये देखना है कि फैट रिडक्शन हो रहा है, मसल रिडक्शन नहीं हो रहा। आप मसल मास भी लूज कर रहे हैं, फैट मास भी लूज कर रहे हैं, सो आप कहीं ना कहीं उस पेशेंट की हेल्थ को खराब भी कर रहे हैं। सार्कोपीनिया एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है इन सब चीजों में, जो आपको वॉच करनी चाहिए।
अगर आप मसल मास लूज कर रहे हैं तो फ्रेलिटी बढ़ती है, फॉल्स बढ़ते हैं, फ्रैक्चर रिस्क बढ़ता है, ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल नीचे जाता है, सब चीज़ों में प्रॉब्लम. सो इट हैज़ टू बी ए स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट अंडर फिजिशियन सुपरविजन. These drugs are magic bullets, but they are double-edged swords. They can be harmful also. So you have to be very cautious when you are using these drugs. But ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ खराब हैं. इनकी जो स्टडीज हैं, इनके बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी हैं. हार्ट प्रोटेक्शन है, मोर्टेलिटी रेट कम है, किडनी में एडवांटेज है, किडनी प्रोटेक्शन है, लिवर डिजीज को इम्प्रूव करें, बहुत सारे एडवांटेज हैं. बट जुडिशियस यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट शुड बी द मैसेज. Friends, we have got Dr. B.M. Makkar Sahab, who is the obesity specialist of India. He is the ex-president of RSSDI, the Research Society for the Study of Diabetes India, one of the biggest diabetes care provider society in the world. So we are here for the 10th RSSDI MP State Chapter Conference. We are here in Khajuraho. So being in Khajuraho, sir, I want to ask you one question. The sexual health is usually considered a taboo subject in Indian society. And sometimes even with their doctors, patients do not want to discuss the sexual health. So what about the incidence or the prevalence of erectile dysfunction in patients who are suffering from diabetes? And also, is there any correlation between the erectile dysfunction and the obesity? So I want to know about the actual status, the data, and some insight into the management of these patients. Thank you, Dr. Parmil. I think it is a very, very important, issue. The problem is it is very rarely discussed because, as you said, the patient does not want to talk to even doctor about his sexual problems. And unless you ask it as a direct question that do you have any problem with your sexual function or your personal life or your intimacy, all those things, they don't open up. But yes, this is a major problem. Now coming to data, I don't think we have a very strong data in India. But whatever studies we have, the studies have shown that anywhere between a third to half people with diabetes and obesity both have some degree of erectile dysfunction. And we know from number of studies that obesity can lead to hypogonadism. And that can be one of the reasons leading to the erectile dysfunction. But bigger challenge with erectile dysfunction is not just hypogonadism. There is a lot of challenge in terms of mental health. People with obesity, they have a lot of impact on their self-confidence, their mood levels, their inhibition to be freely mixing with society because there is some kind of stigma or shame attached to obesity, which is a big challenge globally, and globally all the organizations in obesity are working on how to take away the stigma from obesity. That can be taken away only once people realize that obesity is a disease. It is a disease like diabetes, it is a disease like blood pressure, it is a disease like heart attack, where person who is suffering is not responsible for his disease. We look at a obese person, first thing we talk of is that he must be lazy, he must be careless about eating, he's, eating junk foods. So everything is blamed on patient for his own condition. But it is not so. First thing we have to understand that obesity is a chronic, complex, relapsing disease which is treatable but not curable. And you need to treat it like diabetes or blood pressure. And you need to treat it with lifestyle interventions, medications, if required surgery, and you need to put these patients on long-term treatment. So all these things, if you put in right perspective, then the approach to obesity changes. And then people will start talking about the complications like erectile dysfunction or mental health issues. There are people who don't mix up. They don't want to go to a social gathering because the first thing is they don't want to eat. So they feel that if they are surrounded by food, we call it so-called, food noise. There is too much of food noise. You tend to eat more. Then, if you are eating, then everybody is looking at you. That, you are so much overweight and you are still eating high-calorie food. So, stigmatization is a big challenge. And all this stress, again, is a very
important factor which leads to erectile dysfunction. The image of self-image, which is not good, cuts down your intimacy with your spouse also. So there are multiple factors. It is not just hypogonadism, I would say, but there are multiple things which are contributing to erectile dysfunction, and you really have to, discuss, go into depth of the reason, and then manage it accordingly. So before I give mic to my friend Dr. Navada, I just wanted to ask a quick question to you. As you are in the forefront of the obesity research, and you are also planning to do a big conference on obesity. I believe it's an international conference. So just give us some introduction of that conference so that all the healthcare providers who are interested, they can join the conference. Thank you, Dr. Parmal. So we are hosting the Asia Oceania Congress on Conference on Obesity in New Delhi between 19 and 21st of December this year. So this is actually, we have a obesity society called ARO, which is Advanced Association for Advancing Research in Obesity, and the annual conference of this happens usually sometime in December to February. But this year we have tied it up with the Asia Oceania Association for Study of Obesity, where we, as India, are also part of the Asia Oceania organization. So Asia Oceania countries have an organization called AOAS, and their international conference happens every 2 years, which we are making now every year. This year, Asia Oceania Congress is happening along with ARO as a joint conference, and this is Asia Oceania Conference on Obesity 2025. And I am also pleased to tell you that World Obesity Federation, where we are member as RO and ASO both, has agreed to run a physical scope program, which is obesity management training program. And normally it is done online, and with every module you get some scope points. This time they have agreed to do a physical program, which will be full day program between 9:30 to 5:30, with lot of international and Indian faculty deliberating on very important topics relating to obesity management. So I think it is, something to be attended. And the unfortunate part is we have very limited seats because they want that we should have good interaction. So there will be only about 120 people who can enroll for this. But on the sidelines, we are having faculty from all Asia Oceania region and eminent people from India, so who will be discussing obesity. And I think it is high time that every physician and every general practitioner should have orientation in terms of recognizing obesity as a disease and at least putting the patient on track for weight reduction, or if not, prevention of weight gain. That is the most important thing. सर, पिछले 2004 से 2024 के बीच ओबेसिटी की दर हिंदुस्तान में 4 गुनी हो गई है और आज हम लोग दुनिया में डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहला रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि ओबेसिटी और डायबिटीज सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सर, आपके पिछले 5 दशकों के गहरे अनुभव के अनुसार हिंदुस्तान आने वाली इस मोटापे और डायबिटीज को सुनामी को कैसे टैकल करेगा, इस बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। हम इस पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और RSSDI और डायबिटीज़ इंडिया ने जॉइंट, हमने वाइट पेपर्स भी इस पे इंट्रोड्यूस किए हैं, एंड इवन वी मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया with a white paper on how to cut down the pandemic of obesity and diabetes. So डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिनकी सीडिंग जो है, जिनकी जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, वो मदर के वूम में शुरू हो जाती है। सो अ चाइल्ड born to a obese mother or a diabetic mother with diabetes is likely to become obese or person with diabetes in adult life. A child who is obese is more likely to remain obese in adult life. Child who has, who's underweight because of maternal malnutrition is likely to have early catch-up growth and become obese during adult life. So it is such a complex relationship that very difficult to manage.
Now the bigger problem is, if you look at the women in reproductive age now, almost 25% or 30% are overweight or obese. And the offsprings born to these mothers are going to be highly insulin resistant and more prone to get diabetes and obesity. Now, if we look at the projections from IDF that in next 20 years, what will be the number of people with diabetes? The projections have always been surpassed in past 25 years. The prediction for touching the numbers of 600 million was for 2035. We have already touched in 2025. So, why we are surpassing the projections? Possibly we are not accounting for the parallel growth of obesity, which is increasing the number of diabetes. Now, the proposal to cut this is that we should focus on prevention of obesity in childhood. And once we will reach a stage where every young girl who is getting into motherhood is healthy, you will not be able to cut down the insulin resistance in next generation. And that is a huge task. And a lot of education has to happen at school level, at family level, at social level, at government policy level. A lot of intervention is required. Once we reach that stage that every young girl who's getting into motherhood is a healthy, normal weight girl, then the next generation is likely to become low risk.